Yes, that is not a problem. So I want to ask you guys, should we start coordination compounds? Because chemical kinetics is done. Now, आपके बैच में जो chapters remaining है, those chapters are I think एक to coordination compounds. Then we have और बड़ा chapter तो कोई नहीं है. DNF block, third अच्छा, and amines है, and fourth is biomolecules. Biomolecules that is being going on है ना, biomolecules हम लोग कर रहे हैं Friday. Coordination DNF और amines है. So should we start coordination compounds? Tell me, guys. Because see, with coordination compound, ठीक है चलिए. Okay. Because देखिए DNF block तो ना बिना coordination के अच्छा नहीं रहेगा पढ़ाना. DNF block नहीं चूज कर सकते. Coordination और amines में आपके पास choice था. ठीक है चलिए. फिर हम आप अकेले amines बोल रहे हैं और इस वजह से बोल रहे हैं क्योंकि आपने coordination कर लिया दूसरे बैच में आके. amines वैसे अगर आपको करना है ना यार, can you please message me on WhatsApp after the class, ठीक है ना. amines के सिर्फ और सिर्फ 2 लेक्चर्स हैं. ठीक है, आप उसको रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा तो आपका हो जाएगा. ज्यादा दिक्कत नहीं होगी उसमें. Got it, है ना? Can you guys please set the cameras on? I started the focus mode. Guys, can you please have your cameras on? Kiram, Madiha, Tarif, Shahid. तारीफ आप ना करें, आपका वाईफाई थोड़ा सा स्लो है तो मे बी आपको कुछ डिफिकल्टी हो सकती है. Guys, what happened? Kiram, Madiha, Tarif, and Shahid. Can you please have your cameras on? Thank you. आवाज भी किसी की नहीं आ रही है, कोई बात नहीं कर रहा. Kiram, what happened? So, एक मिनट turning on.
बताइए. Let's start the chapter. Please write the chapter's name, coordinate. Shahid, you can hear me properly? Yes, Shahid. Give me a thumbs up if you can hear me properly. No. Its coordination complexes, first of all, we'll start with Werner's theory. Now, Werner's theory, it gives you that is the starting point of coordination. So, coordination compounds, the starting point is Werner. Not a problem. Can you hear me now, Shahid? Shahid, can you hear me? आपकी आवाज नहीं आ रही है वैसे. चलिए. Write down the topic, that is Werner's theory. So, Werner did many experiments with different types of compounds of the transition metal elements. What are transition metal elements? The D block elements. D block elements के बहुत सारे compounds पे उसने experiment किया था और एक जो experiment था that was with cobalt chloride COCl3. So please don't write this. आराम से देखिए. Once I am done writing, then आप उसको आराम से लिख लीजिएगा, ठीक है? So please keep your pen set and आराम से बस लिखिए. Sorry, keep your pen set and आराम से सुनिए बस, ठीक है? You don't have to write anything at all. Anything, कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ स्क्रीन पे देखिएगा, okay? So COCl3, when he added 6 ammonia, that means for each mole of COCl3, he added 6 moles of NH3. Then he found that he is getting a yellow type of compound. A yellow type of compound, and when this yellow type of compound, it is further treated with AgNO3, then he is getting 3 moles of AgCl. 3 moles of AgCl. Now, after that, if he reacts the same cobalt chloride, but now he reacts with 5 moles of NH3. मायने कि अगर उसने 1 मोल लिया तो इसके 5 लिए, इसने 2 लिया तो उसके 10 लिए, ठीक है? So 5 times लिया अगर, then he is getting a compound that is purple in color. And then when further he reacted this with AgNO3, he is getting 2 moles of AgCl. When he reacted COCl3 with 4 ammonia atoms or 4 moles of ammonia, then he is getting a green color complex. And when he reacts this with AgNO3, it is giving you 1 mole of AgCl. And sometimes when he reacts COCl3 with 4 ammonia atoms, then at that time he is getting violet type of compound. And this violet type of compound is reacting with is giving 1 AgCl when reacted with AgNO3. So there are a few observations here. One observation is all of these compounds are different. Correct, guys? Yes or no? Please tell me. Bolo, haan, ya na. Then you keep your mic on and tell me all of these compounds which are having different color, they are different. Yes or no? Yes. Yes, na? ये बात सबको clear है? ठीक है? Now, if I see that what are the reacting species, the reacting species are different नहीं है. Here we are having cobalt chloride, here we are having ammonia. In all of these cases, we are having cobalt chloride and we are having ammonia. So obviously the reacting species are not different. What changes is the amount of ammonia that we are adding, and only with the amount of ammonia we are getting different types of compounds. Then he suggested that also he saw when he reacted with AgNO3, then he's sometimes getting 3 moles of AgCl, sometimes he's getting 2 moles, sometimes 1 mole, sometimes 1 mole. So from this AgCl part, he concluded that in the yellow colored complex will be having 3 Cl negative ions, then only it is reacting with AgNO3 and giving 3 moles of AgCl. उसी तरह से बताइए, the purple colored element will have how many Cl negatives? The purple colored elements will have how many Cl negatives? If it is giving 2 moles of AgCl, purple colored में कितना होगा?
In the chat, please. Please write in the chat. Yes, correct, Chavez. Iram, Shahid, please, yaar, what happened, guys? Rabah, am I audible? Rabah, can please have your cameras on? Yes, correct. Huh? Two more. Now I can conclude something. That means this yellow colored complex, it has 3 Cl negative ion. This has 2 Cl negative ions. This has 1 Cl negative ions. And this also has 1 Cl negative ion. Correct, guys? Now, we said that, okay, fine. एक चीज तो ये हो गई that they are having different types of ion. Then we said that इसका ये मतलब है the cobalt that we are having, it has 2 type of valencies. And उसको valency को satisfy करने के लिए we have different types of species present in the complex. Also, he said that this type of complex which are giving different types of compound are not normal complex. These are complex compounds. And later on, it was found out that the complex compounds, they have coordination bond. तभी जाके उनको coordination बोला गया. But basically, we started with that these compounds that we are having, these are not normal. These are a bit complex compounds. पहला नाम क्या था? Complex compound was first name that was given to this type of compounds or species. अब उसने बोला कि for the first one, he said that the formula of that compound will be COCl3. Sorry. CO is there. Then it is having NH3 and there are 6 NH3s. Now this 6 NH3, it is bonded with the cobalt. And that bond is the coordination bond that is having sharing of electron. And the 3 Cls that we are having, they are outside the coordination sphere. And in this particular compound, ये बात बहुत ही ज़्यादा important समझने के लिए ध्यान से सुनिएगा. If you are writing, please don't write now. Please don't write. This type of compound, ऐसे compound में जो Cl3 है, this Cl3 is like AlCl3 में Cl3 होता है. So you don't have to worry about the cation here, but whatever Cl3 we are writing, ये जो Cl3 है, this is what it is, such like AlCl3. उसी तरह से मतलब कि this can be ionized. This can be ionized. Similarly, for the purple colored compound, we can say that our complex is cobalt. Then, since we are getting 2 Cl, आपके पास अंदर होगा NH3 whole 5. एक Cl अंदर. Now this Cl, it is bonded with cobalt. And these Cl that is outside the coordination sphere, these are not bonded. They just have ionic interactions, and these are just like MgCl2. MgCl2 में जिस तरह से chlorine, it is not bonded ना, कोई sharing of electron नहीं होती है. Similar type of bond is with these chlorines and this complex ion. But यहाँ पे जो cobalt और chlorine का bond है, that is a covalent coordinate bond. Even though the electrons are provided by the chlorine atom, but both chlorine and cobalt are sharing those electrons. Outside the coordination sphere, we have Cl2, then that is ionic in nature. Similarly, in the next case, we can write, we are having cobalt, we are having 4 ammonia, and we are having 2 chlorine atoms that is bonded with the cobalt and 1 chlorine that is outside. Then here we can say cobalt, and here we have NH3, whole 4, and again Cl2 है ना, तो एक ही मतलब थोड़ा सा बस डिफरेंस होता है इसमें, आइसोमेरिज्म का होता है पार्ट. Now is that there are 2 types of valencies, primary and secondary. Primary and secondary. And then here we are also going to write, ध्यान दीजिएगा, number of independent Cl. Number of independent Cl negatives. ठीक है, ध्यान दीजिए. Primary valency is that if I remove all the ions, whatever is there in the coordination compound, if I remove everything, then what charge will be present? What charge will be present on the cobalt atom? Cobalt में क्या charge present होगा? So if I remove everything, NH3 में तो कोई charge नहीं होता, Cl negative है. So if you remove negative, 3 negative निकालिएगा तो positive बचेगा. ठीक है. So in all these cases, the primary valency is also +3 for cobalt. Here also you have 1 chlorine inside. If you remove that, -1 हो जाएगा. If you remove these two, -2. तो -3 निकाला आपने तो +3 is the valency.
यहाँ पे भी इट इज +3. Secondary valency is what? Secondary valency is the number of ions or group of atoms that is coordinating with the cobalt atom. यहाँ पे देखिए 6 है, so this is 6. Here 5 ammonia 1 Cl, so this is 6. 4 ammonia and 2 Cl, so this is also 6. But the number of independent chlorine is different. पहले वाले में आपके पास 3 क्लोरीन इंडिपेंडेंट है, सेकंड में आपके पास 2 है, और उसके बाद आपके पास एक ही क्लोरीन इंडिपेंडेंट. ठीक है, प्लीज राइट दिस डाउन and raise your hand once you are done writing. The secondary valency is the number of ligands बोलते हैं इनको, ये learn it later on. But how many groups of atoms are present other than the metal? So we have 6 ammonia, 6, 5 ammonia plus 1 chlorine, 4 ammonia plus 2 chlorine, so it is going to be 6. This page. Please raise your hand once you're done writing. The primary valency is +3 because see, ammonia पे कोई charge नहीं होता है. Chlorine has negative, right? So it is 3 minus 1. Now cobalt will be X. The whole charge is 0, so you can, -3 will go that side. You will get +3. Just like oxidation state जैसे निकालते हैं ना, उसी तरह से primary valency यहाँ पे.
Everyone done? Waiting for Fahad and Rabah. Rabah, Fahad and Shavez. Shavez is done. Rabah and Fahad waiting for you guys. Sir, I completed. You're done? Okay. Yes, sir. क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, ठीक है ना? सवाल का ज्यादा टफ सवाल नहीं है. देखिए गाइस, थोड़ा ध्यान दीजिएगा. टर्न योर माइक ऑन एंड टेल मी यस सर, नो सर. ठीक है. पहले वाले कॉम्प्लेक्स में आपको 3 Cl नेगेटिव्स मिले. यस और नो, प्लीज टेल मी. सही है? अरे बोलो भाई. Yes, sir. यस सर. ठीक है. एंड अगर 3 Cl नेगेटिव निकले तो ये एक निकलेगा, ये कॉम्प्लेक्स भी एक निकलेगा ना. इट इज जस्ट लाइक सर अभी जैसे हमने बताया था, दिस कॉम्प्लेक्स इज जस्ट लाइक व्हाट, AlCl3. AlCl3 जब डिसोसिएट होगा तो कितने आयंस देगा बताओ? How many ions will be given by AlCl3 when dissociated? Tell me guys in the chat quickly. AlCl3 को डिसोसिएट करेंगे तो कितने आयंस मिलेंगे आपको? AlCl3 जब डिसोसिएट होगा तो कितने आयंस मिलेंगे? AlCl3 जब डिसोसिएट होगा तो कितने? शाहिद सही है, फहद सही है. नहीं, देखिए गाइस, यहाँ पे आपको मिलेगा Al3 पॉजिटिव और आपको मिलेगा 3 Cl नेगेटिव्स. तो टोटल नंबर ऑफ आयंस दैट यू आर गेटिंग इज 4 आयंस. ठीक है, इसको ध्यान रखिए. यू आर गोइंग टू गेट 4 आयंस. आई होप दिस इज नथिंग न्यू. ये नया नहीं है, लेकिन आप लोग के दिमाग में स्ट्राइक नहीं किया था. इज दैट क्लियर? यस और नो, प्लीज टेल मी गाइस. AlCl3 डिसोसिएट करेगा तो 4 आयंस मिलेंगे, हाँ या ना? बोलो भाई. Yes, sir. यस ना? ओके. रबा भाई, सबको ही बोलो ना यार. व्हाई यू आर टेल मी फॉर MgCl2. करेक्ट शाहिद, वेरी गुड. यस फहद करेक्ट, शावेज करेक्ट, इरम करेक्ट, वेरी गुड. बढ़िया, करेक्ट, वेरी गुड. Rabah, I have not got an answer from you. Can you please write the answer? हाँ, अरे यार, तारीफ आप लिखो, कितने नंबर लिख दो भाई बस. आपने सही लिखा, नंबर लिख दें आप. कितना आयंस हो रहा है ये? हाउ मेनी आयंस? रबा करेक्ट, वेरी गुड. ठीक है. I hope you can see up, you can compare this particular complex with AlCl3. Can you guys compare with AlCl3? हाँ या ना? दिख रहा है आपको AlCl3 की तरह कि नहीं दिख रहा है? Tell me in the chat. नहीं दिख रहा तो भाई मेरे प्लीज नहीं बोल देना, ठीक है ना? तुम लोग प्लीज से नो if you cannot compare that complex with AlCl3, but give me an answer. See, अगर आपको दिख रहा है तब आप yes बोलेंगे. उसके अलावा कुछ भी हो रहा, कंफ्यूजन हो रहा, कुछ भी हो रहा, आप you प्लीज राइट नो. अगर आपको एग्जैक्ट आपको समझ ही नहीं आया सर क्या बोलना चाह रहे हैं, उसको हम कैसे देख ले? वहां पे तो कोबाल्ट, यहाँ पे एल्यूमिनियम, हम कैसे देख ले? अगर आपको ये सारी सवालें आ रही हैं, अगर इन सारे सवाल आ रहे हैं आपके दिमाग में, तो प्लीज राइट नो सर, हमको नहीं दिख रहा है. आई कैन नॉट कंपेयर दैट कॉम्प्लेक्स विद AlCl3. यार जल्दी करो, लेकिन आई विल गिव यू 5 सेकंड्स, अदरवाइज आई विल थिंक दैट यू कैन अंडरस्टैंड. 5 4 3 2 1 0. ठीक है, रबा का आंसर नहीं आया है, इरम का आंसर नहीं आया. यार तुम लोग यस सर नो सर नहीं दे रहे हो आंसर.
चलिए राइट अ क्वेश्चन। कितने आयंस मिलेंगे ये बताना है आपको। गिव द आंसर्स इन द चैट प्लीज। आपको यू हैव टू सी ओनली आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट्स। यहाँ पे अगर 2 है आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट्स, इफ यू आर हैविंग 2, तो ये तो 2 आयंस मिल गए और ये एक पूरा का पूरा आपका होगा, दैट इज द स्क्वायर ब्रैकेट पार्ट। ठीक है, प्लीज कीजिए, राइट द आंसर्स इन द चैट प्लीज। I've got answers from a few people. Prabha has answered for the first one. Correct, Prabha. Fahad, first is correct. Second is also correct. Then again correct. Very good. Fahad, everything is correct. Shahid, correct, correct, and correct. Madhya, correct. Very good. Yep. Yes, correct. Okay, raise your hand if you are having difficulty now. I can understand for the third one. अगर तीसरे वाले में हो रहा है तो हाथ उठाने की जरूरत नहीं है. If you are having difficulty in the first, second, and the fourth one, please raise your hand. If you are having difficulty in the first, second, or the fourth ones, please raise your hand. अच्छा, किसी को नहीं डाउट है? अदर तो आंसर क्यों नहीं आया? रबा का आंसर नहीं आया है, तारीफ आपका आंसर नहीं आया शायद. रबा यू हैव ओनली आंसर फॉर द फर्स्ट वन. दो बार वो भी वो सही है आपका पहला, उसके बाद का तो कीजिए. सेकंड कीजिए, थर्ड कीजिए, फोर्थ कीजिए. इफ यू हैव डाउट लेट मी नो. थर्ड के अलावा इफ यू हैव डाउट प्लीज लेट मी नो. ओके. अरे रबा आप जो तारीफ ने भेजा है. Sir, ये हाँ sir, बोलिए. I don't know why it's coming 1.3 again and again. तो आप लिख रहे हैं तो आ रहा है. No, sir, I'm writing 4 का भी answer 3. So it's not coming. अच्छा, कॉमा देके सेपरेट कर दीजिए सारे आंसर्स जो भी आपको आते हैं. तारीफ फर्स्ट एंड सेकंड एंड फोर्थ यू हैव डन. तारीफ, या दैट इज करेक्ट. वेरी गुड. ठीक है, रबा आप बताइए जल्दी से आंसर. सेकंड का कितना होगा? यस रबा, आंसर फॉर द सेकंड वन. So it's 2. 2. वेरी गुड. फोर्थ के लिए So confused. It's like 3. वाई 3. 3 answer. 3 आंसर नहीं हम पूछ रहे हैं. वाई 3. हाउ यू आर कमिंग टू द आंसर? आई वांट टू आस्क दैट. No, sir, like I till now didn't game for like I'm not getting this answer. वो बात नहीं ना. आप लाइक कैसे आप आंसर कैसे आता है वो हम पूछना चाह रहे हैं. अगर आपसे हम AlCl3 के बारे में पूछेंगे तो आप बोलिएगा इस तरह से ना कि ए सर एक देखिए 3 तो Cl निकल जाएंगे और एक Al निकल जाएगा. इसी तरह से हमने यहाँ पे देखना आपको सिखाया था दैट यू हैव टू सी आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट्स
तो 2 हो गए, तो ये 2 हो जाएंगे आयंस, एंड +1 इज द कोऑर्डिनेशन इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट्स वाले जो होंगे, ठीक है। दिस होल स्क्वायर ब्रैकेट विल बी 1 आयन। सिमिलरली यहाँ पे Cl एक आयन है बाहर, तो एक 1, एंड जो ये पूरा का पूरा आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट्स वाला ये 1, तो 2 हो गया। हियर आल्सो इट इज द सेम थिंग ना, ये Cl क्या है 1, एंड दिस होल थिंग विल बी 1। This गॉट whole इट? तो thing will be कितना? one. हाँ, वही तो इतनी देर से तो मैं ही तो समझा रहे, इस इन सब में भी तो वही हुआ है ना, या कुछ अलग हुआ है? No, sir, because of this PT. उससे आपको मतलब ही नहीं है अंदर से। आपको तो ये दिखना चाहिए किसकी तरह, NaCl की तरह दिखना चाहिए। बात समझ में आ रही? इसीलिए हम बोले दिख रहा है या नहीं दिख रहा आप लोगों को। आपको अंदर क्या है उससे मतलब ही नहीं है आप। बात समझ में आ रही है? Okay, sir. ठीक है। अब जैसे ये देखो, ये आपका एक कॉम्प्लेक्स हो गया, ये एक आयन देगा, और ये एक कॉम्प्लेक्स होगा, ये कॉम्प्लेक्स इन द सेंस उसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, एक आयन देगा, तो 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया फिर से। सही है? गॉट इट? बोलो भाई। Yes, sir. ठीक है, अब देखिए जरा कि आयंस जो देंगे ना वो कौन से आयंस होंगे, उनमें चार्ज क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। नाउ वी आर गोइंग टू, अभी तो आपने सिर्फ वहां पे आंसर लिखा है, प्लीज। वी हैव कोबाल्ट Cl एंड देन वी हैव NH3 होल 5 स्क्वायर ब्रैकेट्स में है, और उसके बाद है आपके पास Cl2। इसको अगर आप पानी में डालेंगे, इसको अगर आप पानी में डालेंगे तो देखिए ये 2 Cl नेगेटिव निकल जाएगा। करेक्ट है गाइस? बोलो। ऐसे ही निकलेगा ना? अरे यार आवाज ही नहीं आ Yes, रही sir. भाई, आवाज ही नहीं आ रही है। यस और नो, 2 Cl नेगेटिव। Yes, sir. भाई सिर्फ तारीफ बेचारा बोल रहा है और आप लोग कुछ नहीं है। व्हाट हैपेंड? इरम, रबा, मदीहा, नहीं समझ में आया? प्लीज हैव योर माइक ऑन भाई, माइक ऑन करो, सब माइक ऑन करो। नहीं नहीं है बेकार, आप लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं। माइक ऑन करें, माइक जल्दी ऑन, माइक ऑन। ठीक है। नाउ दिस होल थिंग इज व्हाट, यहां से निकला 2 Cl नेगेटिव। नाउ अनदर आयन विल बी कोबाल्ट क्लोरीन NH3 होल 5। व्हाट विल बी द चार्ज हियर? चार्ज कितना होगा? यस रबा, क्या ख्याल है आपका? व्हाट वुड बी द चार्ज? Positive. जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, जोर से। Positive. कितना पॉजिटिव? 1. ठीक है। अब यही आएगा आपको, अब एक एग्जांपल सोचिए जहां पे Cl2 आता है, कोई ऐसा एग्जांपल आयनिक कंपाउंड तो सोचिए। जैसे एक Cl आने के लिए NaCl है, 2 Cl आता है, कोई ऐसा कंपाउंड है आपके दिमाग में रबा? AgCl. HgCl तो भाई 2 Cl कहाँ आया, इसमें तो एक ही Cl आया ना। ऐसा कोई कंपाउंड जिसमें 2 Cl आता हो है आपके दिमाग में? नहीं। हाँ रबा? अरे बोलो भाई, हाँ या ना तो बोलो। पता नहीं भाई क्या ही है यार, बोलो भाई, तुम लोगों को जब समझना होता है। बाकी गाइस यार सुनो, जस्ट गिव मी अ सेकंड।
Sorry, I got a call from my mother. ठीक है, सुनिए guys, देखो सिंपल सी बात है, दिस टू, यहाँ पे जो Cl2 है इसके पास 2 नेगेटिव चार्ज है, तो इसके पास कितना चार्ज होना चाहिए ताकि न्यूट्रल हो जाए पूरा का पूरा कंपाउंड? बोलो। पॉजिटिव। 2 पॉजिटिव, ठीक है ना? ठीक है, 2 पॉजिटिव। ठीक है, हम आपको आयंस बनाना सिखा रहे हैं, इस सवाल में नहीं है लेकिन फिर भी हम आपको आयंस बनाना सिखा रहे हैं, ठीक है ना? देखिए गाइस, इफ यू हैव Ag, अगला क्या है AgNH3 whole twice and then we are having Cl. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप तो Cl को लिख दीजिएगा Cl नेगेटिव. नाउ व्हाट विल बी द चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स, टेल मी? अरे बोलो भाई, क्या चार्ज होगा Cl नेगेटिव है तो? +1. +1 ना है, तो बोल ही नहीं रहा है. ठीक है, बाकी कीजिए, सेंड द आंसर्स ऑन माय व्हाट्सएप.
गाइस बाकी के करके आंसर तो भेजिए व्हाट्सएप में, किसने भेजा? हाँ ठीक, माय बैड, माय बैड। मेरा नोटिफिकेशन ऑफ हो जाता है तो आई कैन नॉट। शाबरीज एंड मदीहा ने भेजा है सर। वेरी गुड। थर्ड का नहीं हो रहा है शायद, ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम विद द थर्ड वन, कोई बात नहीं शाबरीज। मदीहा सही है, मदीहा वेरी गुड। व्हाट अबाउट अदर्स बाकी? हमसे क्या समझे भाई, आप क्या लिख रहे हो? ओटीपी दे रहे हैं क्या आप हमें फहद, 4 डिजिट का? 3222 आयंस नहीं, आई वांट द चार्जेस की यहाँ पे सीएल नेगेटिव लिख रहे हैं, कॉम्प्लेक्स में क्या चार्ज है वो आप सही से लिख के बताएं। रबा, आई हैव नॉट गॉट योर आंसर आल्सो। I don't have phone right now, so that's why. Can I say you orally? हाँ चलिए ठीक है, आप बताइए अगले। थर्ड का आपको आया नहीं आया? Sir, no. Fourth one is fourth. हाँ I got. फोर्थ बताइए। Fourth is Cl negative plus ओके प्लस P PTCl the whole bracket positive. सीएल होल ब्रैकेट पॉजिटिव। PDCl3 NH3 thrice is positive. Positive. ओके, नाउ फॉर द थर्ड वन विल बी Pt NH3 होल 4, ठीक है। there will be some positive charge और यहाँ पे भी Pt Cl4 there will be some X negative charge। जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा वही नेगेटिव चार्ज होगा। अभी आप नहीं बता सकते कि कितना चार्ज होगा यहाँ पे, राइट? बिकॉज ना इसका चार्ज एग्जैक्टली पता हमें, ना इसका चार्ज एग्जैक्टली पता हमें। इज दैट क्लियर गाइस? सुनो प्लीज टेल मी, समझ में आई? ठीक है, वो मतलब अभी नहीं आपको पता, वो धीरे धीरे पता चल जाएगा। ठीक है, वी हैव नॉट डन ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज व्हाई अभी आपको नहीं पता, पता चल जाएगा आपको। ठीक है, बट राइट ना इतना आपको पता होना चाहिए दैट व्हाटएवर चार्ज इज इन PTNS3 होल 4 इन पॉजिटिव है ना, वो पॉजिटिव चार्ज है, उतना ही यहाँ पे क्या है नेगेटिव चार्ज। इज दैट क्लियर? यस और नो प्लीज टेल मी गाइस। इरम, फहद, मदीहा, तारीफ, रबा, शाहिद एंड शावेज। Yes, sir. ठीक Yes, sir. है गाइस, चलो अब आपके पास है अगला सवाल। On the basis of the following observation made, the aqueous solution write the formula and assign the secondary valency to metals in the following compounds। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसमें से एक हम आपको करके बताते हैं। ठीक है, आई विल डू द फर्स्ट वन फॉर यू गाइस। कैसे करना है यहाँ पे? See, this is the formula. Okay, this is molecular formula. It is only telling you how much cobalt is there, how many chlorine atoms are there, how much ammonia are there। ठीक है, अमोनिया मॉलिक्यूल कितना हमारे पास। इट इज नॉट सेइंग कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कितना है, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कितना है। तो ध्यान से सुनिए जरा, दिस नंबर इज टेलिंग यू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेटेड। कितना AgCl बना व्हेन इट वाज रिएक्टेड विद AgNO3, तो एक बना। सो इट इज टेलिंग मी दैट देयर इज 1 Cl नेगेटिव। 1 Cl नेगेटिव कहां? आउटसाइड द आउटसाइड स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट में कुछ होगा और बाहर में क्या होगा, बस एक Cl होगा। अंदर क्या क्या हो जाएगा? अंदर यू विल बी हैविंग कोबाल्ट, यू विल बी हैविंग NH3 होल 4 और जो दो बचा Cl। बात समझ में आई? यस और नो प्लीज टेल मी गाइस। ऑल ऑफ यू गॉट दिस? यस और नो प्लीज टेल मी। Yes. यस, बाकी करके हमको जरा व्हाट्सएप पे भेजें। You have to write the compounds। और अगर आपसे पूछा जाए ना सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी, ध्यान रखिए, व्हाट विल बी द सेकेंडरी वैलेंसी? 4 + 2। ठीक है, तो सेकेंडरी वैलेंसी हो जाएगी 6।
अपने हिसाब से सेकेंडरी बैलेंस से कीजिए जो भी आपको भी समझ में आ रहा है। कुछ मिस्टेक्स अगर होंगे तो उनको क्लियर किया जा सकता है, ठीक है ना। इस चैप्टर में जनरली व्हाट यू शुड हैव एम इज दैट यू हैव टू कमिट सम मिस्टेक इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द करेक्ट थिंग, ठीक है। आप अपने हिसाब से जो भी आपको लग रहा है वो कीजिए, फिर उसके बाद आपको बताया जाएगा व्हाट वेयर यू आर गेटिंग रॉन्ग। कुछ इंट्यूटिवनेस आनी चाहिए इस तरह के चैप्टर में। I cannot understand what you are trying to write, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, वंस यू आर डन ना विद द होल थिंग, यू विल शो मी योर, आप अभी दिखा दीजिए जरा, शो मी व्हाट यू हैव डन। Sir, I'm just showing you. ओ माय गॉड, ईद पे चार फहद ने फोटो भेजा है, क्या बात है सर। चलिए देखते हैं। पलेडियम वाला दो, तो दो सीएल बाहर, चल ठीक है, वेरी गुड टाइम, वेरी गुड, वेरी गुड पार। निकल में यू हैव टू, तो यस वेरी गुड, वेरी गुड। एंड जीरो, ओके, ठीक है, जीरो, सो ओके, वेरी गुड, सही है। Uh, यस सनी, so I don't have phone. मैं यहाँ पे दिखाऊं? हाँ हाँ, फिर शो मी। जस्ट अ सेकंड, ये रहा, और यू कैन शो मी। जस्ट होल्ड होल्ड, सही है। फर्स्ट वन इज फिनिश, ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक, करेक्ट।
ये फोर्थ वाले में बस आपको कुछ दिक्कत होगी, वो हम समझ रहे हैं क्या दिक्कत होगी यहाँ पे, ठीक है। बट वट एवर नॉलेज यू आर हैविंग राइट नाउ, वहां तक के लिए सही है, ठीक है। उसमें करेक्शन करना पड़ेगा, सभी को करना पड़ेगा। बट अबाउट अदर्स, मदीहा किसी ने भेजा क्या? मदीहा ने भेजा, ओके। मदीहा शायद Sir, can I show you? एक सेकंड में बात, ठीक है ना, आई विल सेकंड वाले में दो just a second, let me see Madiha's answer. Rabha, you can switch to me now. Yes, Rabha. सेकेंडरी बैलेंसिंग, नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं ना, ऐसे नहीं रबा। देखो हमने कैसे लिखा है, यू सी अ डिफरेंस। छोड़ दीजिए रबा, आप नीचे रख दीजिए उसको, कॉपी नीचे रख दीजिए आप, ठीक है रबा। और ये बताइए आप, ऐसे लिखा है ना हमने, आपने कैसे लिखा है? सी द डिफरेंस। यस रबा, डू यू सी द डिफरेंस? Yes, sir. हेल्प कर सकते हैं? यू अंडरस्टूड योर मिस्टेक और शुड आई एक्सप्लेन इट? No, sir. यू गॉट इट ना? Yes, sir. कीजिए जरा। ओके शायद शायद थोड़ा सा वाटर वाले में आपको ऐसे करना चाहिए ना, जैसे हमने NH3 के लिए किया है। सो NH3 है जिस तरह से, तो उसी तरह से H2O होगा, और यहाँ पे 6 होगा फिर ना। वाटर शायद, यस शायद, यू गॉट इट, ठीक है। करेक्ट कर लीजिए, अदरवाइज एवरीथिंग इज फाइन। और किसी में होता है तारीफ, फोर्थ वन यू डिड इट अगेन। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा, अब हमको बताना पड़ेगा, मदिया आप लोग मत दिमाग लगाइए उसके ऊपर। और ओके फाइन मदिया, Yes, sir. ठीक है। अभी छोड़ दीजिए, आपको जितना इन्फॉर्मेशन था उसके हिसाब से सही किया आपने, डोंट वरी अबाउट इट। तारीफ, आई एम नॉट गेटिंग एनी आंसर्स फ्रॉम यू। तारीफ, व्हाट हैपेंड? Sir, my wife is getting stuck. I just came. वो तो आप समझ ही नहीं पा रहे क्या हो रहा है क्लास में, आई गेस। Yes, sir. रिकॉर्डिंग देखिएगा फिर आप, इफ योर वाईफाई इज नॉट वर्किंग Yes, sir. प्रॉपर्ली। फाइन रबा, आपने करेक्ट किया? Yes, sir. तो मीना, अरे यहाँ ऐसे आपने गंदी कर दिया अपनी कॉपी। दो बाहर, दो बाहर, एक भी बाहर नहीं, एक भी बाहर नहीं, 6 4 4 6 4, ठीक है फाइन 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 फाइन। चलिए बाकी का देखिए यहाँ पे। सो हियर वी आर हैविंग 2Cl बाहर में, सो Pd NH3 whole 4 and Cl2, so secondary valence is going to be 4. Next also we are having 2 chlorines outside, so nickel. Inside will be having water and 6 molecules of water, and then 2 chlorines outside, and this will be having a valency of 6 है यहाँ पे, so it will be 6. Then we are having, now अच्छा इसको देखिए जरा यहाँ पे। So when you have HCl ना, तो HCl क्या होगा? HCl will dissociate into H plus and Cl negative.
बाकी आप बोले सर वाटर भी तो डिसोसिएट हो सकता है, हम लोग वाटर इट डज नॉट डिसोसिएट ना, वाटर कैन डिसोसिएट इनटू H+ एंड OH नेगेटिव, बट दिस डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना होता है, 10 to the power -14 होता है, it's very small, but HCl is a very strong electrolyte. If you are going to have HCl, it is going to dissociate. अब यहाँ पे समझिए आप, you have H+ and Cl negative, and here you have 2 HCl, यहाँ पे 2 H+ मिलेगा आपको और 2 Cl negative मिलेंगे, ठीक है, 4 Cl पहले से ही है, 2 Cl आपको मिला, so now the compound's name will be something like this, the PT, and we are not having any ClCl, so PT, you will have Cl6. Now we have H+ ions, right? So positive. So cations are written first and then the anion. So you will write H2 here. ठीक है? So this is the only new information that you are getting. Otherwise, आपने जो secondary valency वगैरह लिखा था, अपने हिसाब से आपने सही लिखा था. Don't worry about it. Okay. Now then we have PtCl2, 2NH3. Here also you will be having something like this, PT and NH3 whole twice, and Cl2. Valency will be 4. You write this down, let me know once you're done. अच्छा लिख लिया होगा सबने, थोड़ा बहुत जो करेक्ट करना है। कर लिया ना तुमने? ओके, नाउ लेट्स नेक्स्ट। छोटा सा टॉपिक है जो कि बोर्ड्स में आप लोग के पास नहीं आएगा, बट सिंस इट इज देयर इन योर टेस्ट तो वो आपको पढ़ा दे रहे हैं, तो लर्नर थ्योरी नहीं आ जाता इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेईई और नीट। छोटा सा टॉपिक है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। Effective atomic number. What is effective atomic number? EAN का फॉर्मूला होता है the atomic number minus the oxidation number on the metal atom plus 2 times 2 into coordination number। ठीक है, तो अभी आपको ना ऑक्सीडेशन नंबर पता है, ना ही आपको कोऑर्डिनेशन नंबर पता है, बहुत ज्यादा की बात है। See, what is oxidation number? Oxidation number is just nothing, it is just the oxidation state जो हम लोग पहले बताते थे redox reaction वगैरह में, oxidation state। कोऑर्डिनेशन नंबर वही है जो सेकेंडरी वैलेंसी हम लोगों ने अभी लिखा ना, which is the same thing, सेकेंडरी वैलेंसी हमने लिखा, ठीक है। और ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आपको याद हो तो इट इज जस्ट लाइक द प्राइमरी वैलेंसी, एंड Z is what? Z is the atomic number। ठीक है, ध्यान दीजिए। सो लेट अस सपोज वी आर हैविंग, जो हम लोग का इनिशियल कॉम्प्लेक्स था कोबाल्ट का, यू हैव कोबाल्ट NH3 6Cl3, इसको लेके चलते हैं। कोबाल्ट NH3 6Cl, ठीक है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कोबाल्ट, अगर किसी को याद हो, किसी को याद है व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कोबाल्ट? ये याद कर लीजिएगा, 3D सीरीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सक पी वी मन फेको नीकूसन, ठीक है। सो ट्राई टू मेमोराइज इट, रीड इट 10 टाइम्स, आपको याद हो जाएगा। शक्ति विक्रमण फेको नीकूसन, शक्ति विक्रमण फेको नीकूसन, शक्ति विक्रमण फेको नीकूसन। So you have to emphasize that it is feco because you have CO, and this is नीकूसन। Okay, so you have to emphasize to differentiate between cobalt and copper, otherwise आप confuse हो जाएंगे। और आप देखिए बिल्कुल आसान, यहाँ से it starts from 21, so this is atomic number 21, this is 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 and 30, ठीक है। So from here we can see that the Z is equal to how much? Z is equal to 27. What is the oxidation number? The primary valency अगर निकालने के लिए बोला जाए, so NH3 के लिए तो 0 because ammonia does not have any charge, Cl has -3 charge, इसको पॉजिटिव करने के लिए कोबाल्ट पे कितना होगा? +3 होगा,
ठीक है. So oxidation number it is equal to how much? 3. Now what is the coordination number? Tell me guys. जो secondary valency हमने बोला, coordination number कितना हो जाएगा बताइए इसके लिए. Tell me in the chat please. What is the coordination number for cobalt NH3 whole 6? Cobalt NH3 whole 6 का coordination number कितना है? 6. Very good. फॉर्मूले में पुट करके बताइए व्हाट इज द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर. बहाना आ रहा है मेरे का. ठीक से कीजिए. बताइए ठीक से कीजिए. 27 minus 3 plus 2 into 6. 27 minus 3 is 24 plus 12 it is equal to 36. Yes, Iram correct, Prabha correct. Very good. So after this you will write a small topic. उसके बाद हम लोग क्लास खत्म करेंगे. Then you can do the test. ठीक है. So write the heading some important term. Some important terms को देखिए basically हम आपको बता देते हैं. Let's suppose you have a coordination compound where you have cobalt. ध्यान से देखिएगा भी लिखिएगा मत है ना. Then you have Cl2 and then you have NH3 whole 4 and then you have one Cl outside. ठीक है. तो यहाँ पे क्या क्या है सारी चीजें वो बताते हैं आपको. This Cl it is known as counter ion. Okay. Then inside the square bracket you have the central. सबसे पहला जो आपको atom दिखेगा that is central metal atom. The rest of all of whatever is present ना, सारी ये चीजें इनको बोला जाता है ligands. तो यहाँ पे आपके पास दो टाइप के लिगेंड है. ठीक है. क्या क्या? एक क्लोरीन है लिगेंड और दूसरा अमोनिया है लिगेंड. बट पूछा जाए कितने लिगेंड है तो वी हैव 6 लिगेंड्स. बट हाउ मेनी टाइप्स? दो ही है हमारे पास, Cl और NH3. नाउ कॉम्प्लेक्स सेंट्रल मेटल एटम एंड द लिगेंड्स कलेक्टिवली यानी स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो कुछ है उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन. ठीक है. ओके. कॉम्प्लेक्स आयन. अब कॉम्प्लेक्स आयन के साथ इसके अभी और भी कुछ बहुत सारे नाम है. बोला जा सकता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन एंटिटी. ठीक है. प्लीज राइट दिस डाउन. गाइस अभी पता नहीं क्यों आधे लोग चले गए. क्लास इज नॉट इवन ओवर. हमने थोड़ा सा क्या बोला, जेई नीट है सब. Raise your hand once you're done writing.